Om Sri Chinmaya Sadgurave. 376. Atyanta Vairagyavata Samadhi Samahitasyaiva Dridha Prabodha Prabodhatatvasya Hibandha Mukti Muktatmano Nitya Sukhanubhuti Atyanta Vairagyavata Samadhi Samahitasyaiva Dridha Prabodha Prabudhatatvasya Hibandha Mukti Muktatmano Nitya Sukhanubhuti. Nitya Sukhanubhuti means constant floating, marching, swimming in the ocean of bliss. Constant. It is not like that, like human being or any other creature that they swim for some times and they come into the bank. It's like the fish. जिन व्यक्ति का ब्रह्मानंद की रस लग गया, उनके पास दूसरा रस लेके आओ तो छटपटाएगा। भगवान श्री राम कृष्ण को भी हम लोग देखा क्या, रो रहे हैं बच्चे, माँ विषय लगे कथा सुने सुने हमारा प्राण नष्ट हो गया। Oh my beloved Father, I feel too much suffocated by listening, by constant listening to the householders. This is the happiness of Supreme Bliss. Whoever gets, he doesn't want anything else. From Nitya अत्यंत वैराग्यवतः समाधि। समाधि कैसे होता है स्वामी जी? How we will go to the trance. In many spiritual books we get, whenever we read the Gospel of Sri Ramakrishna, we see that on and often in a day, on and often, or most of the time in the day or night, he was in trance, samadhi. How is it possible, Swami? Is it only for Sri Ramakrishna? No. May we also get that state of mind? Yes. How is it possible? Atyanta Vairagyavata. It
become extremely dispassionate for the world. If you become extremely dispassionate, samadhi is the byproduct. But there is an attachment is needed. Attachment with your own self. It is not attachment. It is going back. It is recognized your own self. As if when the river marches into the ocean, it is not attachment to the ocean. It is just being into its own swarupa, intrinsic nature. Atyanta vairagyavataha samadhi. Please pay attention. Don't look here and there, not even in the Googles. Please. Samadhitasya eva. So if samadhita vyakti, only of the person, only of the person, or the extremely difficult, or is samadhi, samadhita, is always in trance. Drida prabodha, prabodha, prakrishta bodha, sweet habits, where there is not an iota of gap, no hair without gap, prabodha, hearing problem? Now is it okay? Yes. Okay. Prabodha, prakrishta bodha, and that is dridha, stable and firm. Our knowledge should be dridha, solid, firm. Sthanu nikhannu nyaya. You know, what is that? If there is, suppose you are fixing a pole on the ground, you know, how do they fix the pole? They dig the land, they place the pole, then put some soil and clay and bricks. Then they start shaking it. Again, they make it tight in the bottom. So in this way, that pole becomes fixed. Likewise, our knowledge should be like that. Bhagavan Sri Ramakrishna's uncle, he was also appointed as a priest in Dakshineshwar. Due to Sri Ramakrishna, because only from his lineage there was priest. It was an acknowledgement, an appreciation for that family, because of them they could consecrate the temple. So his name was Haladhari.
Firstly, he was very obliged because of Sri Ramakrishna and his brother, he got the job. When he was permanent in the post, he started criticizing Sri Ramakrishna itself, that he is a fake person. Whatever he is doing, it's a drama. So, Sri Ramakrishna was okay with it. But when that same uncle, Haladhari, started criticizing Sri Ramakrishna's deity, Sri Ramakrishna was furious. That should be our attitude. In case of, in Ramayana also, we have seen the same thing. If anyone used to say anything to Lakshmana, he did not care. He did not have time to listen to that. But whenever anyone, even the God itself, even the incarnation of God itself, told anything else on Rama, Lakshmana used to become the worst enemy for that person. That extreme shraddha, extreme love, extreme dedication we must have for our aim, for our ishta, and who is helping us to reach my goal, Shastra and Acharya. That extreme firm belief. It's not that today or tomorrow someone will tell, hey, you know what your Acharya done, what. Not listen. Once Swami Yoganandaji was coming to Dakshineshwar by boat, and someone was heavily criticizing Sri Ramakrishna. Though they were very much habituated in it, that we only 5, 10, 12 people come to Sri Ramakrishna with a lot of love. Others are just curious to see that madman. And most of the people criticize him. So when he came, he started telling the fact, what he heard in the boat. Sri Ramakrishna rebuked him that you by itself, how did you listen the criticism about your guru when you are present? Couldn't you cut their tongue? Sri Ramakrishna told. গুরু নিন্দা শুনলে তার মাথা কেটে নেওয়া যায়। দেখুন, এগুলো আমাদের কথা নয়, শাস্ত্র বাক্যান আচার্য গুরু অবতার পুরুষ word. Why? For own publicity? No. It is for the protection of the devotion of the disciple. Unless and until you are having that much of extreme shraddha for the holy trio, Ishta Bhagavan, Shastra
and Acharya, we can't reach the goal. भटक जाएंगे इधर उधर, कहीं ना कहीं तो अब लोग पहुंचेंगे, लेकिन जहां पर पहुंचने के लिए यात्रा शुरू किया था वो नहीं होगा. So a lot of criticism, lot of things will come. People tell me that these things are, these deities like that, these deities like that, extremely criticized, life is like that. It's not our matter of discussion. Whenever I have tied up myself with the things, I'll sacrifice my life. Example, you know, Sri Ramakrishna's family was extremely poor. When Sharadamani Devi was very small girl on that time. So after the marriage, when she came to Sri Ramakrishna's house, how they will decorate the new bride. They hired some ornaments from the neighbor, and Ma Sarda Devi liked all the ornaments so nicely. But one day was over. Now, whatever the ornaments they hired, it should be reback, returned. But Sri Ramakrishna's mother was extremely sad that how should I remove those ornaments from that small girl? Sri Ramakrishna told, see, whenever she will be asleep, I will help you to remove the ornaments. And they did. When Ma Sarda woke up and saw there is no ornaments, she started crying. And on that particular time, the uncle of Ma Sarda came from Jairambati to meet her and heard everything else and heard that Ma Sarda is crying. And that uncle took the decision that I will take my niece immediately, right now. I will not give her. You all are cheater and all those things. So many words. And he took back Ma Sarda to Jairambati. Sri Ramakrishna's mother started crying. Sri Ramakrishna told, देखो बिये तो और भांगबे नहीं. That wedlock, that holy wedlock, what happened, it will never break. Likewise, we need a holy wedlock with that holy trio, and we should have that firm and determined belief that whatever the extreme situation comes, I will protect it. My Shraddha, my dedication, my love. Whatever the situation comes. Situation means sometimes Bhagavan creates the situation as if that it will break. I won't see the face of that harsh Acharya. Bhagavan watches. You have a lot of pride that like me, nobody has that much of faith, trust, love, dedication, respect.
भगवान भी स्थानु निखन्न न्याय करते हैं. That is प्रबोध, दृढ़ प्रबोध. क्लियर? अगर ये दृढ़ प्रबोध, firm knowledge you are having, then what happened? प्रबुद्ध तत्वस्य, of that firm knowledge person, or the person of firm knowledge, bandha mukti, he gets released from all bandhana, all mental imagined bondage. Muktatmanaha nitya sukhanubhutihi bhavati, is liberated from all bondage. Who is the more blissful than him? He is always in bliss. Not a single iota of sadness or anything else touches him. So that is the secret of the vairagya or bodha. Bodha means Brahmanistha. ये दोनों से हमारे स्वरूप की ज्ञान होता है. How do we get our own intrinsic nature's knowledge that who we are from dispassion and from firm knowledge. And only this knowledge we get liberation from the samsara bandhan. Now it has been told that when your dispassion is terrible, intentionally I'm coining this word, contradictory word, terrible. Terrible dispassion for the world and worldly object and worldly pleasure, then only we are in trance. Means we are in real meditation. Meditation for 24/7. That is actual meditation. ध्येय वस्तु में मन हर पल जब लगे रहते हैं, उसी को ही ध्यान कहते हैं. उसके पहले बाकी सब कुछ धारणा है, ध्यान नहीं. वैराग्य कब होता है? जब ब्रह्म चिंतन में, ईश्वर चिंतन में जगत भूल हो जाता है. उसी समय भगवान की पाद पद्म में मन पड़े रहते हैं. जगत के विषय में कोई होश ही नहीं रहता. मन तुई दे আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে আদরিনি শ্যামা মাকে যতনে
হৃদয়ে রেখো আদরিনি শ্যামা মাকে। দিখনদারি নেই, মনে তুই দেখ আর আমি দেখি। It's a holy, very holy wedlock between me and myself, me and my intrinsic nature. Means my mind, buddhi, chitta, ahankar, and my swarup. But our indriyas, our sense organs are always extroverted, bahirmukhi. They're always running after the things and outside. How I will pull them back inside? Only through Ishvara Chinta. Always. जगत की जो भी काम करो, इस क्लास के बाद ब्रेकफास्ट बनाना है, चाय बनाना है, और नहीं तो मेड है, उनको देखना है क्या कर रहा है, ठीक क्या कर रहा है। ये हैबिट हो जाता है। लगता है नहीं देखने से संसार बिखर जाएगा। ऑलवेज थिंक आई विल डाई। तब क्या होगा? जब वैराग्य नहीं आते जब जगत में, तब मृत्यु का चिंतन करो। मेरे मरने के बाद क्या होगा? मैं तो नहीं रहूंगा, तो आज क्यों नहीं हो रहा है? आई एम ऑलवेज इन द बैक ऑफ। क्या लेगा वो, क्या बिखरेगा? ये बोध की बात है। नहीं स्वामी जी, आपको पता नहीं, हमारा मेट तो एकदम नया है, उनको सब सिखाना पड़ता है, नहीं तो सब इधर उधर कर देगा। कहाँ इधर और कहाँ उधर। काल भी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति आए, स्वामी जी आई एम सो बैड लक, मेरा नौकर का भाग्य इतना खराब है, लास्ट 6 months आई एम सफर। वो रहते हुए भी मुझे काम करना पड़ता है, इसीलिए मैं आपके क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाता। अच्छा, क्यों अम्मा, क्या हुआ? अरे वो नहीं स्वामी जी, पता नहीं, वो चीनी का डब्बा इधर रख देगा, ये से। मैं बोला रख देगा तो रख देगा, वही तो करेगा भाई। अरे वो नहीं डालता है। अब इस चीनी के डब्बा के लिए ईश्वर की चिंता। उन्होंने भी समझा, उसके बाद बोला ये आप समझेंगे नहीं स्वामी जी, आप तो संसार नहीं किया। खास मैंने नहीं। और किसने बोला मैंने संसार नहीं किया? ये संसार से कम क्या है? इतना बच्चा सबको मना के, बुला के लाना पड़ता है, किसको डांटना पड़ता है, उसी को ही प्रेम देना पड़ता है, कितना कुछ बोलना पड़ता है। ये संसार से कम क्या है? पूरा दिन भर तो मेरे बच्चे किस लेकर ही है। ईश्वर चिंतन कैसे करूंगा स्वामी जी? आपको पता नहीं संसार की रस क्या है, आपको पता नहीं ईश्वर क्या है। ईश्वर इस रस वैसा। अब जिस रस के पीछे दौड़ रहे हैं, वो तो उस रस का एक बूंद भी नहीं, और उसके पीछे आप दौड़ रहे हैं। आपके सामने समुंदर है, और वो भी रस की समुंदर, खारा पानी की नहीं। रस की समुंदर को छोड़कर आप बूंद के पीछे दौड़ रहे हैं।
हाय हाय। गुरु का काम ही है वो खींच के लाते हैं, आप आओ आओ आओ। उस बूंद के पीछे मत जाओ, ये देखो समुंदर इधर है। अगर ये इसके ऊपर मैं विश्वास करूं कि हाँ ईश्वरी रस वैसा रस की स्वरूप है, तब हम लोग कोशिश करूंगा उस रस को चाखने के लिए, देखने के लिए, स्पर्श करने के लिए, डूबने के लिए। वह ऐसे समुंदर है जहां पर डूबने से, डुबकी लगाने से लोग अमर हो जाता है। खारा पानी की समुंदर नहीं, अमृत की समुंदर है। बिकॉज ईश्वर इज रस वैसा। एक बार वो रस आप चख सकते हैं तो मन कहीं नहीं भटकेगा इधर उधर। लेकिन विषय की प्रति आकर्षण, संसार की मल्टी फैसेट्स, मल्टी डायमेंशनल इवेंट्स मन को ईश्वर से हटा देता है। इसको फिर से कैसे ईश्वर मुखी करूंगा? अभ्यास न तु कौन्तेय, निरंतर अभ्यास। नाम, नाम जप। नाम नामी से पहले आया। राम के पहले राम के नाम था तो, नहीं तो उनका पिता माता कैसे नाम रखा? राम के पहले ही तो परशुराम आया था, आए थे ना? तो राम कहाँ से आया? मतलब नाम की शक्ति नामी से भी ज्यादा है। नाम पे भरोसा करो। जिनका जप मंत्र है जप करो, कांस्टेंट। और क्या करेंगे इस उम्र में? और क्या करेंगे नाम के सिवा? क्यों नहीं करेंगे? बार बार अभ्यास करते करते स्वरूप हो जाता है। स्वरूप की ज्ञान स्वभाव हो जाता है। जब भी आप जिनको जप करना आता है ना, वो कुछ भी ले, ये ऐसे करके लेगा, ऐसे करके उनका हाथ घूमेगा, हाथ ऐसे घूमेगा कि ऐसे 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 नहीं, तब तो अभ्यास हो जाता है। ऐसे करके घूम जाता है, मन उधर ही लगे रहते हैं। तब ईश्वर चिंतन ही हमारा स्वभाव हो जाता है। तब विषय से विराग जो है वो अपने आप हो जाता है। बलपूर्वक करने का जरूरत नहीं। बलपूर्वक वही व्यक्ति करते हैं जिनका ईश्वर में प्रेम नहीं। ईश्वर से प्रेम बढ़ाओ, संपर्क बढ़ाओ। हर दिन दर्शन नहीं होता है। अब जिनको बहुत प्रेम करते हैं, आपका बेटा ही चाहे बेटी या ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, क्या हर रोज बात होता है? ऐसा भी तो होता है, इंटरनेट शट डाउन ये वो। जब जब हम लोग देख नहीं पाते, तब क्या होता है? चिंतन और बढ़ता है। आपके ईश्वर चिंतन के बारे में ऐसा क्यों नहीं होता? जिस दिन दर्शन नहीं होता है उस दिन चिंतन तो और गहरा। जब में दर्शन होता है, होता है, होता है। विश्वास कीजिए, ये इस साधन जीवन में दर्शन बहुत मामूली बात है। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं। जब ऐसे हो जाएगा ना, तब इंद्रिय ग्राह्य जो वस्तु है वो अपना ताकत खो डालेगा।
उनका खींचने का ताकत चला जाएगा। ये जिनका अवस्था है वही वैराग्य की, एक्सट्रीम वैराग्य। और एक्सट्रीम वैरागी व्यक्ति तद्गत प्राण हो जाता है। तद्गत, उनके सिवा शयन नहीं होता है, उनके सिवा स्वपन नहीं होता है, उनके सिवा जागरण नहीं, मन उसी में ही रहता है। और उसी को ही शास्त्र में समाधि बोलते हैं। व्हाट इज समाधि? दिस इज समाधि ओनली। सब एक हो जाता है। मैं डिलीट हो जाता है। तब एक ही रहता है। इसी को ही निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। कोई विकल्प नहीं, देयर इज नो अल्टरनेटिव। उसी को ही बोला है समाहितस्य प्रबोधः। प्रकृष्ट बोध, प्रकृष्ट ज्ञानम, आत्मज्ञानम, स्वरूप ज्ञानम, कितना कितना शब्द से समझाया गया। और निर्विकल्प समाधि के बिना आत्मज्ञान दृढ़ नहीं होता है। आत्मज्ञान दृढ़ नहीं होगा तो समाधि नहीं होता, समाधि नहीं होता तो आत्मज्ञान दृढ़ नहीं। बच्चा होने से एक व्यक्ति का डेजिग्नेशन हो जाता है पिता। पिता डेजिग्नेशन हो गया मतलब उनका बच्चा हुआ। ये दोनों साइमल्टेनियसली आता है या नहीं? कि आज मेरा बच्चा हुआ, कल मैं पिता डेजिग्नेटेड हुआ, नहीं। आज ही, उसी वक्त, उसी क्षण में। तो ये प्रबोध और समाधि एक साथ साथ चलते हैं। क्लियर? तब संसार नहीं है, तब नित्य सुखानुभूति। When a person is not disturbed by the objects, emotions, and thoughts around him, he is said to have supreme detachment. When the objects within and without can no longer tantalize one's thoughts, then alone can one reach that state of samadhi. Transcendental experience is possible only to those who have cultivated complete vairagya, complete dispassion. Realization is possible, realization is possible only in the state of samadhi. Please pay attention, look at me. Don't look at the book, please, during this class. You study before the class or after the class, not during the class. Realization is possible only in the state of samadhi. One who has thus awakened to the supreme state of Brahman, to him alone there is total liberation from all the bondages of samsara. The persecutions of a dream end only when the dreamer wakes up. The liberated one alone can have eternal bliss.
this bliss experienced by a man of realization is not dependent upon the objects around. He revels in his own self. Nandati, nandati, nandati eva. Bhaja Govinda. Hari Om Tat Sat.